Good morning students. Today we are going to start exercise 17D in which we are going to divide measures of mass. So we are going to solve question number first A part which is given 96 gram divided by 4. So like this you have to divide. You will write this 4 as a divisor and 96 as a dividend and you will write gram here. यहाँ पे आप एक place छोड़ेंगे for caution, that means for answer. एंड उससे ऊपर हम क्या लिखेंगे ग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय दिस 4. सो 4 की टेबल में 9 नहीं आता है बट इससे एक लास्ट नंबर आता है दैट इज 8. सो 2 टाइम्स 8 एंड देन सबट्रैक्ट. सो इट विल बी 1. नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस 6. इट विल बी 16 and in the table of 4 16 comes 4 times only. So 4 times 16 and then subtract again, remainder is 0 and the answer is 24 gram. So you can write 24 gram which is the answer. Next is 891 gram divided by 9. So again you are going to write like this. Then in the table of 9 8 never comes, 8 इससे छोटा है, so we'll take this 89 and 9 की टेबल में 9 टाइम्स क्या आता है 81. so we are going to take this 81 and then subtract. so it will be 9 minus 1 8, 8 minus 8 0. then we are going to write this 1. so now again 9 times क्या आ जाएगा 81 and then subtract, remainder is 0 and the answer is 99 grams. This is the answer. Similarly, you can solve other two parts of question number 1. In next question, question number 2, B part is given 816 kilogram divided by 3. So अब हमें 816 को 3 से divide करना है which is in kilograms. So first we are going to start with this 8. So 3 की टेबल में 8 नहीं आता है. We'll take 2 times 6 and then subtract. The remainder will be 2. Next we are going to write this 1. This is 21 and 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 7 times. So 7 times 21. Again subtract. It will be 0 as a remainder. Then at last we are going to write this 6. So in the table of 3 6 comes 2 times. So we'll take 2 times 6 and then subtract. Remainder will be 0 and the answer is 272 kilograms because ये kilograms में था. So we are going to write 272 kilogram. This is the answer. In the next one, C part, 408 kilogram divided by 4. So in the table of 4 4 comes 1 time. So 1 time 4, then subtract, it will be 0. Next is already 0. So 4 की टेबल में 0 0 times ही आएगा, so we'll take 0 only. Then at last we are going to take this 8. So in the table of 4 8 comes 2 times. So we'll take 2 times 8 and then subtract. The remainder will be 0 and the answer is 102 kilogram because ये भी किस में था kilogram में था. That's why 102 kilograms. This is the answer. Similarly you can do other two parts. Now in question number 3 terms are given in kilogram and grams. So you are going to write like this. आपको यहाँ पे kilogram और gram के बीच में एक space रखना है and then you are going to divide with the numbers. So we are going to divide this 36 kilogram 93 gram by 3. So first of all 3 one time हम क्या लेंगे 3 because आगे भी 3 था यहाँ पे. Then it will be 0. Next is 6 and 3 की टेबल में 6 2 times आता है. So 2 times 6, remainder is 0. Next we are going to solve this part जो gram वाला part है. So first we are going to take this 9. So 3 की टेबल में 9 3 times आता है. So we are going to write 3 times 9 and then subtract. It will be 0. Next we are going to write this
3. सो 3 की टेबल में 1 टाइम आता है, सो 1 टाइम 3 and the remainder is 0 and the answer is 12 kilogram and 31 gram. So हमारा जो आंसर है that is 12 in kilograms and 31 in grams. This is the answer. In D part it is given 525 kilogram 450 gram divided by 5. So we are going to divide this by 5 and we are going to write like this. Then 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है, so we are going to take 5 1 time, then subtract, it will be 0. Then there is 2, so we cannot divide this 5 by 2, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, so we are going to write this 5 also. So जब भी हम नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं हम क्वेश्चन में क्या लगाते हैं 0. Now we are going to write this 5 and this will become 25 and 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है, so 5 टाइम्स 25. Then again subtract, it will be 0. Next we are going to write this 4. अब हम ग्राम वाले जो नंबर्स है वो सॉल्व करेंगे. सो 5 की टेबल में 4 नहीं आता है, दिस इज द लास्ट नंबर. सो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट नंबर और नोट करेंगे. सो जब हम नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं हम ऊपर क्या लगाते हैं क्वेश्चन में 0. नाउ यू कैन राइट द नेक्स्ट नंबर, दिस इज 5. Now this is 45 and in the table of 5, 45 comes 9 times. So 9 times 45 and then subtract. It will be 0. Now at last there is 0. So 5 की table में 0 0 times ही आएगा. So in the question we are going to write 0 and then subtract 0 also. So the remainder is overall 0 and the answer is 105 किलोग्राम एंड 90 ग्राम्स. आगे जो 0 है हम उसे काउंट नहीं करेंगे. सो 105 किलोग्राम 90 ग्राम इज द आंसर. नेक्स्ट इन ई पार्ट 798 किलोग्राम 917 ग्राम डिवाइडेड बाय 7. सो इसे हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये किलोग्राम वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे एंड 7 1 टाइम विल बी 7 ओनली. Subtract 0, then there is 9, so again we'll take 1 time 7, subtract, it will be 2. Next it is 8. So 28 कितने टाइम्स आता है 7 की टेबल में 4 times 28. Now the remainder is 0 for this kilogram part. Now in the gram part, first of all you are going to write this 9 and 9 क्या लेंगे हम 1 टाइम 7 ही लेंगे. सो 1 टाइम 7, then subtract, it will be 2. Next is 1, so this will become 21 and 3 times क्या आता है 7 की टेबल में 21. Again subtract, it will be 0. At last there is 7, so we are going to write this 7 next. And 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, so 1 टाइम 7 and then subtract, the remainder will be 0. And what is the answer? The answer is 114 kilogram 131 gram. This is the answer. In G part it is given 872 kilogram 400 gram divided by 8. So अब हमें इसको 8 से डिवाइड करना है. So 1 time 8, then subtract, it will be 0. Next is 7. So हम 7 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते because this is the last number by the divisor. So we are going to write the next number, that is 2. So जब भी हम next number note करते हैं हम क्या करते हैं, in the quotient we are going to write 0. Now this is 72 and the table of 8 72 comes 9 times. So 9 times 72, then subtract, it will be 0. Next we are going to write this 4. Now as you can see 4 को भी हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते. So we are going to write the next number also which is 0. और जब भी हम नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं हम ऊपर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन में 0 लगा देते हैं. नाउ 8 की टेबल में 40 5 टाइम्स आता है, सो 5 टाइम्स 40, subtract, it will be 0. Next is 0, right?
सो 0, एच की टेबल में 0 कितने टाइम्स आएगा? 0 टाइम्स. सो 0 टाइम्स 0. Then subtract. It will be 0 in the remainder now. And what is the answer? The answer is 109 kilogram and 50 gram. So children, this is your homework. Do question number 1 B and C part, question number 2 A and D part, question number 3 B, C, F, H part in your notebook. जैसा मैम ने आपको करवाया है आप बिल्कुल वैसे ही आप अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, ऑफ एक्सरसाइज 17D. थैंक यू.